हाल है? It's been so long. गाड़ी कितनी क्लास की है यार? Thank you. How are you? Nothing less than this for you. No, babe, it's amazing. Nice. I like it. What's going on? What's going on with you? How was your day today? Let's see. Sunday. Woke up, worked out, spent a little time with mom, and planned. All right. I'm a The rest of planner. the week? You know, I like to plan what this guy is coming right into you. Uncle, Wow. what is he doing? Okay. It's all right. He's got it together. Bye, y'all. Ajá, how do we start? What's happening? We'll just get into it, nah? Oh, we just get into it. Yeah, relax. So we were okay. Yeah, like Okay. ease into it. Okay. और क्या पूछना है? So, like, So it was a good start to the day because it was a good end to a week. You know, for me, Sunday is all about Saturday. okay. And in this time, everything's very difficult for everyone in this new economy. And I think everyone is struggling to make sure that they are fair to each other, or at least I hope that they're being fair to each other, because in times like this, you can utilize this space to make a lot of excuses to not be fair to those who work for you or those who buy from you. Okay. So it is a constant struggle with increasing prices to not want to take that toll on your client, and also not want to not understand that your staff is also going through the same mengai as well. Right. And to be able to sustain, if not also elevate their scale or their what they're taking home. But wait a second. Who are the two people that you're trying to make, like, stay fair with each other, you said? No, we're not with each other for them. Like, I want to be good to my workers. Right. I want to make sure that as inflation happens, I can keep increasing their salaries in the same kind of level. Yeah. And then I don't necessarily want to be unfair to my client, because if I increase my prices, if I increase my salaries, I have to increase my prices. Right. And I've announced that I'm not going to increase my prices. Oh boy. So Yeah, you're gonna take the hit. I'm going to take the hit. Right. So I don't mind taking a hit, only because for me, money's not been the be-all, end-all in my life. But I have to make sure all the things work, i.e. my mother's healthcare works, my father's healthcare works, running his house works, running my mom's house works. My life in general, the lifestyle that I have, I can make it work as much as possible. Of course, we're all going to have to make adjustments, and I am. Ooh, we gotta tweak. Yeah, so I like to tweak, and I don't mind tweaking. Right. I don't mind rolling with the dice. Right. There's a dice being rolled. You've got two options. Either you can say, boo-hoo, I didn't get a 6. Or you say, okay, I got a 2, and let me see what I can do with that 2. That's it. So I'm very much about, I got a 2 right now. Right. And I got to figure out how to get that 2 to make it feel like it's a 6. Because it's not going to become a 6. So, let's face it. So today so Sundays are for you to devise what you're going to be doing? Sunday's a day for me to just catch my breath. All right. We finished the week on Saturday. This, of course, Saturday was, as you know, the 1st. Yep. So of course, salary day, blah, blah. And I have a very strict policy of paying everyone their salaries on the 1st. I know this is not a big deal to a lot of people, but for me, it is a huge deal. Right. Doesn't matter what, come hell or high water, right, everyone will be paid on time. We will not have people holding and waiting for their salaries. Right. I think that's the one thing that you ask any of our HSY employees, they'll say that salary's always on time. Always on the 1st. Boom. On the 1st. Regardless of inflation or no sale, blah, blah, blah. I will complete my commitment. Yeah. But ये कहना बड़ा आसान है, I will complete my commitment, and I guess people who listen to it also be like, oh yeah, of course they करने का. But यार, कितनी problems होते हैं? You run a business. Yeah. You know when sometimes you have business, when you don't. Sometimes you have costs that have gone high. Sometimes you've decided to invest in something in your business and you cannot. So people, a lot of, often are at a standstill on the 31st or the 30th, like, oh God, kal kya karna hai? Yeah. So yes, now I'm relaxed. I'm happy. I'm glad. I'm relaxed. Also, my mom is feeling great. Oh, sure. She's feeling better, she feels great, as in she feels better, and when she feels better, I feel great. So, yeah, I'm in a good space right now. I'm glad. I'm happy for you. I'm happy for Auntie. I mean, she's been on the down for a bit. 2.5, almost 3 years now. Yeah. Yeah.
It's been very tough for her. It's also tough on the caregivers. So let's fist bump that we look after our parents. You look after your parents too, right? Yeah, my mom passed away in Feb. That's right, I heard. Yeah. I'm so sorry. So yeah, I did that. How I was gave that? her the how do sent you her off. how do you feel? Yeah, my mom also asked me that. It's very weird. Like now that my dad is also not, he passed away 7 years ago. Right. So mom passed away 8 years later. Right. And it's weird. I'm a grown up. You're Do not. you feel it? Yeah, like it's like I'm not her. I'm not her anyone's child you're not anymore. Anyone's child. So that. How does it feel though, if you could put it in a word? And when I say, let me give you choices of words that I often think for myself. Maybe I'm trying to get an answer for myself. Is it aloneness or loneliness, or is it some kind of regret, or is it some kind of relief that they are no longer in the place that they are in pain, etc.? Yeah, relief for sure, because in my mom's case she wasn't in pain really, but she was trapped in her half paralyzed body. Right. She was lucid, she had her memory, she could talk, all of that stuff, after her stroke. Right. Whereas many people I've heard, elderlies, when they have a stroke, though, it could go either way. Right. So her, that was all intact, but obviously there was brain damage, so she was there were many bits of her that were like, that's not her really, Right. her attention span and all of that. Right. So, she wasn't the same, and of course for a woman like her who's always on the go and, taking care of the house, the children, so seeing her like that, and she felt frustrated, so yeah, there's relief. I don't have regrets, in her case especially. I do a bit, but still, before she passed away, I've said this so many times, I started writing a gratitude journal, which when my brother and dad passed away, because that happened kind of back to back. Right. So I, as you know, I kind of shut off. I stopped even taking your calls and everything, right? Right. And I stopped taking work. So that shook me and traumatized me. Right. And I think I still have that PTSD. But a couple of years ago, I started writing a gratitude journal. So every day for the past 3 years, I've been saying I'm grateful that whatever time I have with her, I'm thankful for it. I'm glad, even if she has a stroke, she knows me, she remembers my name, we talk, whatever. I can call her, I can visit with her. Right. And that, when she went, even on the day that she passed away at the hospital, she wasn't lucid, she would be in and out. Right. So I was writing in my journal, and honestly, Sheroo, I wrote things like, I'm glad I've got enough resources to take care of her. I'm glad she's in a good hospital. I'm glad doctors are looking after her. I was writing that kind of stuff, and then it kind of just, probably somebody walked in and I just trailed off, and I read it again. I'm like, wow, I'm in a different headspace. Right. But you acknowledged your headspace. I did. I had to. There was no way I could not. When I stopped taking, let's say, your calls, I was actually also not attending to myself. I had shut off. I wasn't even listening to why am I doing this? Why am I closed off now? So I had to address that, but I addressed it a little too late. But I don't think there's anything as little too late. What I'm saying? Like I feel at that time lots of people didn't understand, and kind of. But that's okay. Yeah, that's all right. And that's okay. It's not for everyone to understand everyone's journey. I don't think any of us are here on this world to fully understand or to make the effort to fully understand someone's journey. Everyone's journey is so complex, so complicated. Right. I think it would be a miracle if we just understood our ourselves. Own. It would be just a bloody miracle. And I also think that as time has gone on for myself as well in this business, in this life, in this world that I have been so lucky to inhabit, you cannot take things too hard. You can't take things too seriously. You cannot take other people's disconnection as a lack of approval of yourself. Right. It's not about you. It's not about It's really not about you. Right. It's not about it. It was never about you with them. Yeah. And it was never about them with you. I'm sorry. That's all right. So you're your saying. experience to that.
I don't know, can I tell you, हम लोग एक दूसरे को फलसफे देते रहते हैं दुनिया में, हर बंदा एक दूसरे को फलसफे देते रहता है, जैसे वो थोड़ा कुछ सीखता है वो समझता है वाह यार मुझे सब कुछ आ गया है, ये मेरा फलसफा है। और फिर 4 दिन बाद 2 और चपेड़ें पड़ती हैं, 2 और चुमियाँ मिल जाती हैं और लगता है कि नहीं, मोहब्बत के बारे में गलत था और दर्द के बारे में भी गलत था, वो तो ये है। एंड वो फिर एकदम से सोचता अब मुझे आ गया है, अब मैं क्या करूँ, इसका फलसफा झाड़ता हूँ, फलसफा देता हूँ, तुम्हें भी अपने दोस्तों को भी, दुनिया को बता देता हूँ, 1 मिनट आपको बेटर आइडिया, डिक्लेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट लगाता हूँ, पैसिव अग्रेसिव, सबको पता चल जाएगा, दिस इज वेयर आई स्टैंड। 4 days later, you will be a different person. Absolutely, you change your mind. 4 minutes later, you could be a different Absolutely. person. I don't know if everyone's going to be 4 minutes later. I don't think everyone is taking their lives so in depth, or looking at it in that way. So, here's the great thing about what we're talking about. It's not about, yes, you disconnected. Yeah. When you needed to disconnect, you were going through loss. It is a keeping some level or avenue of communication open that is very important for the other person to have some kind of inclination of where you're going to. And that communication, and let me tell you, I'm not chastising you, I'm not saying कि तुमने कुछ गलत किया. वो communication ऐसे भी हो सकती है छोटा सा के just a brief but to the point message that takes little energy out of you, that says, I'm going through something right now and I really cannot connect. I hope you understand. Which should not require an answer, but the other person should understand. When there is no communication at all, and when there is no कुछ किसी को पता नहीं होता और फोन नहीं उठ रहे होते, तो हर बंदे की दिमाग जो है वो अनफॉर्चुनेटली रूल्ड होती है उसके ईगो से, उसकी इनसिक्योरिटी से। वो उसके दिमाग में आना शुरू होता है, यार इसने मुझे फोन नहीं किया क्योंकि अब उसके साथ ज़्यादा दोस्ती हो गई है ना, नहीं अच्छा वो मेरा एक्स एम्प्लॉय इससे शूट करा रहा था शायद इसलिए हो गई है, नहीं फलाफला ने जो मुझे स्टैप किया था वो उसके साथ मैंने तस्वीर देखी थी शायद इसलिए हो गई है। तो आपके पास वो इनसिक्योरिटीज आना शुरू होती है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाएं, कामयाब हो जाएं, लोगों के आंखों के आगे बहुत बड़े आपको स्टार समझें, आपको प्यार करें, यार आपकी इनसिक्योरिटीज रहती हैं, आपकी फेयर्स रहते हैं, ये इंसान का एक हिस्सा है। आप एकदम से ऑटोमेटिकली होकर सुपरमैन नहीं हो जाते, लाइक ओ मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, बकवास है ये सब कुछ। सही बात है। ऑफ कोर्स होता है, हर बंदा फील करता है, हर बंदे की थिन स्किन जो होती है वो थिन होती है। आप बड़े पर्दे पे अगर लग जाए इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप एकदम से किसी के अटैक के यू नो you're safe, like oh you're attacking me, you're writing all these horrible things about me, my character, whoever. I don't care. Oh, I don't care. Yeah, I'm cool. It doesn't bother me. And you think it shouldn't bother me because I'm making money. Please. Yeah, that's got nothing How to do is with that my protection? That is my work. And Yeah. another thing. बहुत से लोगों का कहना है कि जी you know he has money or this one has money or this one. Nothing of this is in our hand. ये तो रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। मेहनत तो लिटरली हर बंदा करता है। कौन है ये जो मेहनत नहीं करता? सही बात है। कईयों को अल्लाह कोई खास आपको एक I think it's a random blessing. picking. बिल्कुल। It's आपको एक ब्लेसिंग मिल जाती है। बिल्कुल। बेवकूफ वो है जो उस रैंडम पिकिंग को अपने आप ऊपर एक ब्लेसिंग नहीं सोच रहा और समझ रहा है कि ये मैं डिजर्व करता हूँ। वो एक डॉगी का बच्चा है। मगर जो Do you not? almost That had an was accident, close. That was. almost killed 2 people, No, he didn't. but he didn't. It wasn't me killing anyone. Sheroo. No, you're fine. But that one you have to. Yeah, no, he's okay. Good. All of a sudden, no questioning your driving. Yeah, what was I saying? I can't even remember what I was saying. What I was saying is that communication is a really important tool. Lack of communication is also a very big weapon, and bad communication is the worst weapon of them all. किससे मैं अभी कुछ देर बात कर रहा था, मुझे वो बता रही थी कि बात को नाप और तोल के बात करनी चाहिए कि ये ज़रूरी है, इसकी कोई वैल्यू है, इस वैल्यू से उस दूसरे इंसान के अंदर कोई वैल्यू आएगी, ऐड हो रही है कि नहीं, कोई ऐड हो रही है, कोई ऐड ऑन है। अगर उसकी बात करने से उसकी सिर्फ बेइज्जती होनी है या उसको सिर्फ बुरा फील कराना है तो ना बताओ। कुछ होते हैं ना दोस्त, अच्छा यार क्या हाल है, वहाँ बैठे में गप्पे हो रही है, हाँ यार मैं वो खाने पे गया हुआ था, यार सब तेरे बारे में बड़ी बकवास कर रहे थे मगर मैंने नहीं की। Oh my ओ God. भाई
कोई दसने वाली गल है ये what is तूने चंड कराई हाँ नहीं बात तेरी तूने सुन के चंड ना तूने तो चंड तो कराई नहीं होगी वो तो अगर तेरी इतनी हिम्मत होती चंड कराने की तो तू चंड करा के मुझे बताता भी ना ये होती सही नेकी करो और दरिया में डालो तूने तो कुछ बोला भी नहीं मगर ये मुझे बताने का क्या फायदा हुआ इसी तरह जो तुमने मुझे नहीं बताया ना वो मुझे लगा वो मुझे अगर तुम हल्का सा कुछ कह भी देती ना मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कहना चाहिए था I did though. No, you didn't message me and say I'm in a bad place. No, this is 7-8 साल पहले I did. Oh, no, That I did. I don't think so. Of course, Sheroo. मुझे याद है कि ये तुम गायब हुई थी फिर No, मगर अगर ये लिखा होता तो मैं नाराज ही ना होता उस वक्त नहीं लिखने के बाद no we spoke you and I definitely spoke and I did tell you my brothers passed away yes, and yes, you know no, all I of remember that. this. So that I mean that वो मेरे लिए stretch हो गया ना time. You disconnected for some time. तुमने तो बहुत लंबा उसको. Yeah. I mean देखो बहुत लंबा गया मैं नहीं कह सकता हम कौन है कहने वाले का लंबा. No, but it was. But it was. Yeah, मैं तो छोड़ चुका था कि मैं आपको मैसेज करना मैं नहीं करूँगा. मैं यूँ करूँ. Obviously वो दूसरे अपने यार के साथ शूट करे जा रहे हैं मेरे साथ नहीं कर रहे मैंने भी नहीं करना मैं भी फोन नहीं करूँगा. Are we good now? Yeah. You know, I've never not been good. But it does hurt. I know. मुझे गुस्सा चढ़ता है. I know. मैं गलतियां कर देता हूँ दूसरे लोगों को मेरी गलतियों से भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है उसने यहाँ नहीं बुलाया उसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया मगर मेरी इंटेंशन कभी नहीं है किसी को नाराज करने की या उनको दिखाने के लिए कि मैं नाराज हूँ. आपका वैसे by the way आपका नाराज होना मेरे साथ it shows that I mean something to you. Yes, but मैं रूठा हुआ था मगर नाराज नहीं था. पता है मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद. मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए. Right. You know, single parent, उनकी जंग, उनकी काम पे dysfunctionality. अपने बहुत दाद देता हूँ अपने आप को कि बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया मगर उस काम जल्दी करने में भी बड़ा दर्द है. बड़ा एक क्या कहेंगे एक जंग थी. अब मैं जंगों से डरता हूँ. जंगों से डरता नहीं हूँ मतलब मैं जंग लेने पे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा. मैं डरता नहीं हूँ किसी से. I don't like I'm going to be worried about you or you're going to mess me up or you're going to do something. No. Come. I'll take you on. Not an issue. Bring it. Bring it and I will take you to task. But I'd much rather us not have conflict. I'd much rather conflict not happen because these days, every single day that we have, which is so beautiful, we're wasting that much time on conflict that we could have just used to not have bothered with each other at all. So, Absolutely. I don't like conflict. So that's why I never had conflict with you. मेरा और आपका conflict तो है कभी भी नहीं था, but there was radio silence, and for that I'm sorry. It's okay. And I was in a bad space. And I appreciate you telling me that. I appreciate you telling me, and I'm happy that we're over that. Yeah. We're now over to get after that car. No, kidding. Acha, so आपने well because I had to not formally. I mean this is a conversation sort of format. I want it to be very casual. So I don't read up on people. आपके बारे में तो खैर I didn't have to because we've got history and we've worked together and kind of done a lot together. We've grown together. Yeah, we have absolutely grown together. So Amy मजे में क्या मजे में भी क्या चले मजे में Amy, I googled you. अच्छा, you googled me. Have you ever googled yourself? No. I've never googled myself. So people are there are questions, right? There's a template of questions that pop up. The most recent or the most frequently asked questions about you on Google. What is HSY famous for? What is HSY age? Who is HSY wife? Or who is HSY father? Oh yeah, I heard about the father that's on. People are curious, man. Yeah. And I mean, after reading yours and then after searching for another couple of people, celebrities, big names, तो सबके ना सर कोई ना कोई पॉप अप हो रहा था. मेरे बारे में कोई नहीं आया. I even googled myself. So basically search ही नहीं कर रहा कोई. तो यानी it is so I am just trying to prove to you that these are genuine questions that people are actually googling you and looking for. Okay. So what do you want to address first? How old are you?
That's a good question. How old do you want me to be? You know what, Sheroo? मैंने आज तक, like I said, मैंने तो कभी, you know, आप जो कहते हैं मैं तो मानती हूँ, लेकिन guess what? आपकी विकिपीडिया पे पूरी प्रोफाइल दी हुई है with age, But with can I tell you everything. something? मेरी जो Google पे, no, I don't know about Google, but Wikipedia पे Wikipedia जो पे. age है, that is my age. Yeah. Yeah. Cool. Birthday's Next. coming up. Huh? Your birthday's Yes, coming my up. birthday's coming up. Yes. A few months down. People tend to think Hmm. that I am older than I am because of the years of I've worked. Because I've worked Yeah. for 28 years. Yeah, you started And, young. Yeah. And I'd like to think that they think I look younger than what my age is because I think I look younger. You do. करे. You do. मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि यूथ जो है वो आपके दिमाग में और आप खुश रहें तो आप अच्छे लगेंगे. And मैं खुशी जिंदगी जीता हूँ. But I started working very early. You know, I directed my first show at 17. Yeah. And that was 28 years ago. So Yeah. do the math. Yep. Do the I math. get you. I get you. I mean, that's But I feel the youngest and healthiest I've ever felt in my life today. awesome. Because I live a very clean life. Mm. I don't smoke. Mm. I don't drink. Right. I am very particular about my sleep. I wear this machine called Whoop, which measures my sleep, and I try to get my 7.5 hours to 8 hours every day. Nice. I check my heart rate. I like to think that this body that Allah has given me, I must take care of. Because this body is not just mine. It Yeah. also provides Absolutely. for and takes care of many people who are connected to it. Right. My parents, Right. my family, all the people who work for me. Right. I can't not Yeah, take this yeah. seriously. So you're being responsible now. Oh, yeah, I'm, And you work out. I work out every day. I run every day. Wow. I take time out for myself every day. Mm. And I work. I work a lot. I run a business called HSY. It does well, mashallah. I act. I'm just doing a new movie with Mayba Shayat. Ooh. Yes, telefilm. Very excited. It's turning out great. I work with different charities and try to give back. I try to be a good son, which just takes time. So it's a time-taking process. Like, Yeah. din mein waqt lagta hai. Right. And how do you divide that with? Wait, you know, this is something actually very interesting because I've been through it. I see Maram going through it. You know, when you're living with a parent who's not well, Yes. how do you get into the headspace of work and then caregiving and then getting a phone call, and how do you tackle that? With great difficulty. Right? With the utmost difficulty. लेकिन जो मर्जी हो जाए, आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो, आपको लगे कि हर चीज बिल्कुल जिंगला है. जब आपको वो कॉल आता है ना कि कोई बीमार है या कुछ हो गया है, your heart stops. You rush back to वो जो 5 साल का लड़का नहीं था जो खड़ा हुआ कोने में रो रहा था, जिस शेरू को मैं पहले कहीं छोड़ के गया था, मैं वापस वहां आता हूँ helpless, like क्या करूँगा? What will I do? How will I fix this? But you know, Allah is very kind to me. And I know I say this a lot, but I really mean it. Somehow, within seconds, I will get this strength. Like, you will do it. Yeah. You're going to fix this. Right. You're going to go. You're going to be the pillar of strength. तुम खड़े होगे, तुम सारा काम कराओगे, तुम डॉक्टर से बात करोगे. तुम्हारी माँ को या अबू भी बीमार रहते हैं, और अब मैं उनका ख्याल भी रखता हूँ. उनको भी उस वक्त कुछ एहसास नहीं कराना कि they should be worried. You have to give them sahara, you have to give them strength, and you have to just get this thing done. Right. क्या वो जो फीलिंग है वो वापस आती है? Absolutely. कभी मैं खत्म होके जब मैं अपने कमरे में जाता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ, हाँ, तो कभी मुझे बहुत रोना आता है. Yeah. मैं हिल जाता हूँ Right. कि ये क्या हुआ है, मैं कैसे करूँगा. और मगर मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे मेरी मदद कर, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं करता रहूँ. मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ यही करता हूँ. इसके साथ करने से मुझे जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है कि मैं उनकी मदद कर सका हूँ, उससे मुझे खुशी भी बहुत मिलती है. Absolutely. So Of course. it's I all mean- connected. Yeah. But yes, it is a roller coaster. It is a roller coaster of a life. It is a roller coaster of emotions, Right. and it is a roller coaster of good and bad. Right. I Because can't say my roller coaster is worse than other people's. I'm sure people's roller coasters are much worse. But I'm only acknowledging mine. And just like your life or my life or Right. people watching's life, you just have to really enjoy the good yeah.
and hold on for dear life through the bad and not let go. Right. Yeah. Because मुझे यही feel होता है, lots of people look at celebrities like you and they think that background में कोई मसला नहीं चल रहा, and that to me is, I mean, वो बकायदा they kind of, that's why they're so rude on on Instagram or whenever, however they can reach you, yeah, troll other celebrities. It's like, do you even know what a person is going through in their day, in their life, in that year or years? And we pass judgment so quickly. And we basically, हमें बस वो दिखता है कि शेरू ये है जो आप Instagram पे let's say दिखा रहे हैं. You're not, because you're not sharing your private life there. Right, I mean, So मैं what do अपना you- रोना धोना तो वहाँ लगा नहीं रहा, Right. और ना ही मैं लगा रहा हूँ कि आज ये मसला हो गया, आज ये Right. बीमारी हो गई, आज मैं लिटरली तस्वीरें पढ़ रहा हूँ कि इस मुश्किल वक्त से मेरी माँ को निकाल दें. ये चीजें हम ऑब्वियसली शेयर नहीं करते, और मेरे ख्याल से हर बंदे को शेयर करने की ऐसी बातें कोई जरूरत है भी नहीं. Right. इंस्टाग्राम जो है वो आपका थेरेपिस्ट नहीं है. बिल्कुल. वहाँ आप चीजें लगा के लोगों की वो नहीं मांग सकते कि आप मुझे एडवाइस करें और ये करें वो करें. आपको वो लोग जानते भी नहीं है. Right. मैं पोस्ट करता हूँ क्योंकि लोग मेरी जिंदगी के जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकें. Right. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद ना, तो प्लीज Unfollow एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Right. बट इसमें मैं समझता हूँ कि दो जो मुझे समझ आती है कि दो चीजें हैं. एक है कि हमारे जो लोग जो कमेंट इस तरह करते हैं उनको मैं अक्सर इरिटेट इतना नहीं होता, मैं उनको इरेज करके मैं ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वो इस प्लेटफॉर्म पे ना करें, वो कहीं और तो लिखेंगे Right. कि शायद वो खुद अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश हैं और शायद खुद अपनी जिंदगी में इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं कि वो लैश आउट कर रहे हैं. और वो लैश आउट कर रहे हैं अगर किसी और के पास उनको लगता है कि उनकी तरह से इतना नहीं है, या वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो वो अपनी उस बिटर और एंग्री और पिस्ड ऑफ जिंदगी में वो चाह रहे हैं कि वो चीज जो है उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाह रहे. Right. वो लैश आउट करेंगे. एंड कुछ लोग बिटर एंड एंग्री नहीं है, कुछ लोग बस एक बेबस हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी में कहीं फंसे हुए हैं. Right. उनके अंदर एंगर और बिटरनेस अपनी जिंदगी के बारे में नहीं है, मगर अपने सूरत हाल के बारे में तो जरूर है. तो वो शायद आपके बारे में इस तरह लगते हैं. मैं कोशिश करता हूँ अगर ऐसा कोई बंदा हो जो मुझे लगे कि थोड़ा सा बात में मान जाएगा, तो मैं वापस लिखता जरूर हूँ कि सॉरी, आई अंडरस्टैंड यूर सेइंग दिस, बट यू नो दिस इज व्हाई आई डिड इट. मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. Right. मगर जहां मुझे सिर्फ ऐसे गालियों वाले आए या बस एक फ्लैट स्टेटमेंट आए, उसके लिए तो मेरे पास कुछ जगह नहीं है. दूसरी चीज, हम लोग हर बंदा अपनी जिंदगी को और दूसरे इंसान को जज करते हैं अपने बेंचमार्क से. ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि ये मेरी एम्पैथी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा लेवल है. Right. अब किसी की जिंदगी के, ये मैं नहीं कह रहा कि लेवल ऊपर नीचे है, एक्सपीरियंसेस फर्क हो सकते हैं. बिल्कुल. उनकी ग्रोथ में, उनके परवरिश कहते हैं, Yeah. ये वर्ड है, Nurturing. Yeah. Nurturing. Yeah. कंडीशनिंग में Right. चीजें फर्क हो सकती हैं. हम अपने अगर एक फिक्स स्टैंडर्ड से सबको ना जज करें तो ये बड़ा अच्छा है. इससे बेहतर क्या है कि आप किसी को जज ही ना करें. अरे भैया, हमें जज करने वाला हमसे एक बहुत बड़ी ताकत है, वो तुम नहीं हो. बिल्कुल. वो तुम नहीं हो, ना तुम थे, ना तुम कभी होगे. बिल्कुल. हमें जज करने वाला हमसे बहुत बड़ी एक ताकत है, और उसी को अल्लाह सजा को ही. और जजा देने दो. हाँ, प्लीज. We're not here to pass your tests and trials. And if you are here to be the police of the world, Yeah. then police yourself. Yeah. Police yourself First. first. Look into your own backyard. Because, buddy, let me tell you, you're going to have some things that you're probably dealing with yourself. Right. And you're probably making it about someone else, thinking, this happened wrong with me, and it's because of this, or it's because of that. It's not. ये तुमने एक बड़ी मजे की बात की थी कि I was acknowledging my emotions. अपनी acknowledge emotions भी करें. दिन में थोड़ा सा वक्त निकालें. मैं जब ट्रेडमिल पे होता हूँ ना, and I do a treadmill every day. मेरे लिए वो घंटा होता है या 45 मिनट्स होते हैं जहाँ मैं ना सिर्फ वॉक कर रहा होता हूँ, मगर मैं सोच भी रहा होता हूँ अपने बारे में. अपने आप को एनालाइज कर रहा होता हूँ. तुमने कल कहा, इसके तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने क्यों कहा, तुम इसको किस तरह ठीक कर सकते हो. और ना सिर्फ ये, उसके रूट पे जाओ कि तुम्हें ये कहने की जरूरत ही क्या थी. तुमने कौन सी ऐसी चीज है पीछे जो तुम उससे सड़ के तुमने ये किसी को ये बात कह दी, और अब उस बात को तुम्हें माफी देनी पड़ेगी. अपने आप को इजाजत देनी पड़ेगी कि अपने उस मुश्किल वक्त को, उस दर्द को भूलो, आगे बढ़ो. Right. Accept it, address it, and right, move on. and move on.
These conversations, I don't know if we're all having. I don't know what people are living. मैं तो ये नहीं कह सकता हम अपनी एक बहुत privileged जिंदगी जीते हैं. We have a very privileged life. Yeah. We're sitting in a very big, gorgeous, very expensive car. Right. I'm no one to say, oh, you should be doing this because I don't live your life. बिल्कुल. And I honestly, I have no clue the pain that you're in. The only thing I will give you the advice of, and that too you don't have to take, is that search for the good in whatever it is that you have. Because if we don't hold on to the good, hold on to the hope, without hope there's nothing. And Yeah. hope can only come from a place of self-acknowledgement, understanding, figuring yourself out. Is this something you started, or मैंने तो आज तक honestly शेरू इतने सालों में मुझे नहीं मौका मिला था to look within. It was only because of my trauma Yeah. that I kind of, my life stopped, and I was like, you know, and then with time, even that with time, because first I was just grieving probably and just depressed and whatever, but much later I started saying, what is going on with me? Why am I behaving this way? What, you know, who am I? Yeah. And what am I now? Who am I going to be, or what am I becoming? तो हम लोग, were you this self-aware पहले से, या is this also something that's happened with time? I was a very observant kid. जब मैं छोटा था मैं लोगों को बहुत keenly observe करता था. ठीक है. छोटा 12-14 साल का लड़का कहीं काम कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली देखता था कि ये जीत किस तरह होनी है, लोग क्या कर रहे हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं, मैं क्या करूँगा तो वो देख के शायद मुझे ना डांटे, ना कुछ कहें, मेरा यहाँ से काम हो जाए, मैं अपने आप को सेव करने की कोशिश करता रहता था. उस तरह ऑब्जर्व करते करते मैंने लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया, मगर मैंने रियलाइज किया कि मैंने उस वक्त में अपने आप को कम ऑब्जर्व किया. ये वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली एक सेल्फ असेसमेंट और एनालाइजेशन शुरू होती है, मगर ये सबसे ज्यादा तब हुई जब कोविड हुआ. जब कोविड हुआ तो साथ ही मेरी वालदा भी बहुत बीमार हो गई. शी गॉट वेरी सिक एंड शी कुडंट वॉक एंड शी गेट बेडरिडन. So my life was my work and my mother. Right. My work stopped. Right. My mother couldn't move. I didn't know what life was. Right. But life was still happening. I was still waking up. Right. I was still needing to eat Breathing. breakfast because I was hungry. I was still breathing. The bills were still coming. Right. And it wasn't that it was just about the bills. I was still feeling emotions, even though I had. So I said, wait a second. I have only prepared myself to think for these two things. But there's so much else outside that I need to train myself about. And the only way I'm going to be able to do it is to find out more about me. Figure out more of what makes me tick. What are the things in my life that are holding me back emotionally? Not financially, emotionally. And when I started discovering, I realized that there's so many answers that we don't have. हम लोग एक quick solutions ढूंढ रहे होते हैं. Right. Depressed हो गए, Netflix लगा लो. Yeah. सैड हो गए, गाना लगा लो, डांस कर लो, Right. या उस चीज को भूल जाओ. Right. कोई दवाई ले लो, भूल जाओ. भूल जाओ, बस भूलो. Yeah. Put a sweeper on the carpet. और ये Right. सबकी गलती नहीं है हमारे कल्चर में. Yeah. ये हमें बताया जाता है, बिल्कुल, बेटा बिल्कुल. अपने बारे में क्यों रो रहे हो, हाँ. उसको देखो, उसकी मुसीबत देखो, यानी कि अपने फीलिंग्स को तो एक्नॉलेज ही ना करो ना. तुम जो फील कर रहे हो, जितनी भी, अब तुम्हारी गलती नहीं कि वो बाहर सड़क पे रोल रहा है, Right. मगर क्योंकि तुम सड़क पे नहीं रोल रहे, अब तुम उसकी गिल्ट भी फील करो. एंड क्योंकि तुम्हारे दिल में ऐसे कोई दर्द है, तुम इसको फील ही ना करो, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक ही नहीं है. हाउ डेयर यू. Yeah. एंड नहीं हो पा अपने रहा. आप में से निकलो. बिल्कुल. Whereas पहले तो अपने अंदर घुसो भाई. बिल्कुल ढूंढो तो सही. बिल्कुल अपने आप से निकलो. बिल्कुल एब्सोल्युटली. बड़ा मैंने सुना है बचपन में. और उसके अलावा अगर अब नहीं हो रहा तो यार अब कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे अपने साथ बैठा नहीं जा रहा, मेरे अपने ख्यालात जो मेरे थॉट्स हैं वो उनके साथ मैंने डील ही नहीं करना आ रहा. समझौता एक्सप्रेस तो चल ही नहीं रही ना. तो क्या करें, टेलीविजन लगा लें. Yeah. टेलीविजन लगा लें, Escape. पार्टी पे निकल जाएं, Yeah. मगर अपने आप को बैठ के उसको एक्नॉलेज ना करें. Yes, sometimes you won't find the nicest things. Yeah. Sometimes Sometimes when you look within, you'll be like, what? yeah, there's some darkness This there. is ugliness. I need to Yeah. address this toxic thing about myself or But I whatever. hope that people Yeah. all want to address it. Some people see it, they see that it's just too far gone and then let it go. ये गाड़ी अच्छी है. Sir, 4 सर्कल वाली गाड़ी तो बहुत ही अच्छी थी. नहीं, shape अच्छी थी. Anyway, so that's, yeah. I guess the moral of the story being, look into yourself, heal yourself.
And that shouldn't wait till you're, like a lockdown like myself happens or a pandemic. in my 30s, Yeah. it shouldn't happen then. Yeah. Good one. I like it. Listen, people ask me how old am I? I always say I'm 30 plus because it's true. It's true. I am 30 plus. When I stopped dyeing my hair, Yes. somebody said to me, "What are you trying to prove?" And that just, I didn't know what to say. I didn't know what to think about my own self. Some ajeeb si reverse psychology But slash why did you start dyeing your hair? gaslighting. Yeah, my hair was severely damaged with all the hair dye. It leaves so much. What do you call? It just layers up all that gunk, man. And my hair became rough and frizzy. But and rough. it wasn't a declaration of something for you? No. Okay. It was just I don't want to be sitting in a chair every 2 weeks because the roots are showing up. Yeah. Like, forget it, man. I want to be I want to be low maintenance. Fair enough. Yeah. Fair enough. Now I'm not low maintenance. Don't we know it? No. I pretend every now and then. I mean, this takes hard work. Yeah, I don't know about that. But I like a little fuss every now and then. Well, that's fine. I mean, Yeah. clearly what I was trying to cover up was so much Yeah. silver that it wasn't really working for me. It was damaging the hair texture and everything. So I prefer, okay, I've got hair, I can style it whatever I want. She's got hair, she don't care. Huh? But I don't have hair, so. Yeah, humidity works differently on you. Yeah, you don't care about humidity anymore. Well, I do because पता है क्या sweat जब आता है ना तो beads में आ जाता है. I mean, I don't mind the sweaty scalp. Like, I think, but ठीक है, मैं shine कर रहा हूँ. But everyone will be staring at me thinking like, बेचारा बड़ा, he must be really hard right now. He must be in a lot of pain. And usually I'm like, no, I feel nothing. Acha, would it, I mean, I think a linear way to see how you've grown is to go back in time and we talk about where you studied and everything. Is that something you feel like doing? Sure. Because people, when they see a person, I would want them to know where you studied from and how you've, let's say, in Pakistan or outside Pakistan and how you've grown. So it's a long conversation. Okay. Sure. I left Pakistan when I was very little. Okay. I mean, I was very little. I think I went to kindergarten abroad. Yeah. And my mother and my father, their marriage ended, and my mother took us, and we first went to Abu Dhabi, and then we were in New York. So that was where my initial, मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ. बड़े लोग मेरे accent का और मेरे अंग्रेजी का वो कभी सोचते हैं कि मैं एक accent मार रहा हूँ. It's the only accent I know because मैंने सीखा ही वहाँ से था. बिल्कुल. वहाँ से when we came back, I was, I want to say 15. All right. 15 or 16. Okay. And came back, and I was in American system. It was very difficult कि अब O levels के system में कैसे जाना है. Plus मुझे literally कोई दाखला ना देने के लिए तैयार था because मैं कोई test pass नहीं कर रहा था. What is this, man? And I'm sure you were excelling in the States. I was okay in the States. Okay. I was not bad in the States, but no one was willing to give me an admission here. Also, my mother didn't have the money to put me through school. You have to understand, जब हम वापस आए थे, she didn't have that much money. So I wanted to go to a good school. I didn't want to go to a bad school. I wanted to get a good education. I thought, why am I not deserving of it? But एक चीज जो मेरे पास थी वो था the gift of communicating, I guess. बोलने का तो मुझे शौक था मुझे. You're good at it. I'm born with it. I'm good at expressing my thought. I'm good at expressing my opinion. And I believe that since I was working as a very young child, I'm not underconfident. I'm confident. So confidently I can go and... उसके बारे में भी हम बात करेंगे. Wait,
What was your first job and how old were you? I was 12 and I was working in a library and I used to put books back. Where at? In the U.S., New York. Nice. In my school library. And then from flipping burgers to you name it. Fantastic. Yeah. So in your formative years, you... Tuitions, I used to teach my own grade school kids because my English was good, so I would just have tuitions for my own school kids at home. And I was strangely enough very good with biology. And chemistry wasn't all that bad too, so I would teach that as tuition. So I would literally open up a tuition center. I was in O levels and I would study less for myself and give more tuitions. I was giving tuitions to tons of people at that time while being in O levels. Right. But I paid for my school that way. Oh wow. And I paid for my A levels that way too. And मैंने अपने O levels के भी सारे पैसे खुद दिए थे. मुझे याद है कि जब मैं O levels करने गया था तो कुछ सोच रहा था ये कर ही नहीं सकेगा बिकॉज ये तो अमेरिकन है और मैंने पूरा स्कूल को हिलाया था ये कोई माने ना माने स्कूल वाले मानेंगे मैं अपने बीकन हाउस जाता था डिफेंस कैंपस और बड़ा एक कंजर्वेटिव सा स्कूल था और मैंने लिटरली सबको हिला दिया था कभी मैं फैशन शोज करा रहा होता था कभी मैं कुछ करा रहा होता मुझे लगता था कि बस लोग चीजें करें मुझे लगता है कि सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं है इंसान को दुनियादारी इंटरेक्शन कम्युनिकेशन ये बड़ा जरूरी है दीज आर इम्पोर्टेंट टूल्स तो ये हमने किया और हमारे स्कूल के माशाल्लाह से वो मेरे क्लास के बच्चे सारे अभी बहुत सारे कामयाब हैं मैंने कहा मेरी वजह से मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आई हैड लिटिल हैंड टू प्ले इन इट बिकॉज़ आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस you opened their eyes. Yes, then I got once I graduated from there and I did well. My A levels गया A levels में I went to Lakas. Nice. Again, paid for it myself. I used to pay. मैं शाम को tuitions देता था. और wow. पढ़ता था and I did okay there too. फिर मैंने उसी के बीच में मुझे मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, where I lost my eyesight, and when I got my eyesight back, I finished up my A levels. And this is in Pakistan? In Pakistan. The accident? Yeah, model town में हुआ था. हम अपना रोजा खोल रहे थे गाड़ी में, बारिश हो रही थी और गाड़ी लगी वो लंबी स्टोरी है हो गया ठीक हो गया सब ठीक है उसके बाद फिर जब वापस मुझे नजर आना शुरू हुआ तो मुझे like you lost your sight. Yeah. How long? Some time. Like months? Yeah, well, whoa, a little more. But what? I wanted to be everything that my mom and my family thought I should be, right? So I wanted to, and not that they told me कि तुमने ये बनना है, मगर मेरे दिमाग में खुद ही बैठा हुआ था, politician का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब politician है, मुझे शायद लॉयर बनना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरी माँ बड़ी खुश होगी। अब मेरी माँ एक सिंगल माँ जिसने बड़ी मुश्किल से अपना बेटा पाला है, दुनिया को भी वो दिखाना चाहती है कि देखो व्हाट मैंने अपना बेटा पाला है, मैं उनके लिए उनको कामयाबी हासिल करना चाहता था, तो मैं सोचा कि मैं लॉयर बनूंगा। मगर एक्सीडेंट के बाद जब मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं इतनी देर से किसी को बता नहीं रहा था कि मुझे फैशन और मुझे कलर्स और मुझे ऐसी चीज़ों की बहुत शौक है, बिकॉज ये आदमी वाला काम नहीं ना, आदमी तो करते नहीं। तो मैंने फिर अपनी माँ के साथ बैठा, मैंने कहा मामा you know Allah has given me this gift back, I can see again, and I can see and I'll tell you मामा I see things that you don't see. जब आप मुझे चम्मच से खिलाती है ना और मैं उस चम्मच को देखता हूँ, जितना खूबसूरत मुझे वो चम्मच लगता है ना, आपको समझ भी नहीं है आपको चम्मच क्या है कितना खूबसूरत। और जब आप कोई लाल कपड़े पहन के आती है ना, आपको सिर्फ रेड नजर आता है, मुझे ऐसा लाल नजर आ रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये लाल है, ये एक दिस इज अ गिफ्ट, ये अल्लाह का एक तोहफा है, आप मुझे प्लीज जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दें। सोचता तुम क्या करना चाहते हो? And I said I want to be a designer, I want to go into fashion. भी फैशन स्कूल खोला था, पर मेरे पास आर्ट का कोई था नहीं, बैकग्राउंड नहीं था। So I took 1 year off after A levels. Okay. And I worked. I was a cashier and जो दुकानों के अंदर बोतलें नहीं ठीक करते हैं, जो प्रोडक्ट्स रख के मर्चेंडाइजिंग करते हैं, अच्छा, और कैशियर में बैठते हैं, और जो विंडो डिस्प्ले, हाँ, वो मैं पेस्ट नया खोला था और मैं वहाँ काम करता था। What? हाँ, और साथ साथ लोगों के घर भी पेंट कर देता था, फर्नीचर को रीपोस्टर करने में बंदा बुला लेता था, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना है। I was what? 17. Oh wow. फैशन शो कोई हो रहा है वो डायरेक्ट कर लिया, मगर मैंने पूरा साल आर्ट लेसन्स लिया।
और मुझे कभी घबराहट नहीं थी कि मैं किसी दुकान पे काम करता हूँ, मेरे को अमीर अमीर दोस्त जो थे सारे वो आते हैं और मैं कहते हैं कि हाँ शिरू केचप कहाँ लगी हुई है, मैं कहूँगा आइल 2 में और मैं वहाँ से ले भी आऊँगा। आई डिडंट केयर, मुझे कभी ऐसी घबराहट नहीं थी कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कम हूँ, मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मुझे आई नेवर। मैं आज भी ये समझता हूँ पैसा आपकी ताकत नहीं है, आपकी अकल आपकी ताकत है। पैसा इज नॉट ताकत। तो मैं घर भी रिक्शों में जाया करता था। रिक्शे क्या, जब रिक्शा नहीं होता था कभी मेरे पास नहीं होते थे डिफेंस, वहाँ से पेस से हम लोग DHA में एक 5 मरले के ऊपर के एक कमरे में रहते थे, मैं और मेरी माँ और मेरी बहन जब शादी हो गई थी। तो वहाँ से पेस से यहाँ रिक्शा आता था 30 रुपीज़ का, और अगर बंदा बड़ा ही तंग कर रहा होता था 40 रुपीज़ का। अब 40 रुपीज़ अ डे मेरे पास नहीं होता था। अब 40 रुपीज़ का अगर रिक्शा नहीं मिल रहा तो कहीं से किसी मोटर बाइक को कह दिया प्लीज़ भाई ज़रा ड्रॉप कर दे, या किसी दोस्त से कन्विंस कर लिया, या लिटरली उन दिनों में तो तुम्हें टांगे भी होते थे, रिक्शा ये वो रेडियाँ चढ़ गए, जितना देर हो जा सका कहना बस जी ये थे, मैंने कहा उठ कोई बात नहीं, उठ के मैं वापस। I was never afraid of these things. Wow, and no I think qualms. no qualms at all. And I think this really helped me. Helped me also in not having any qualms about going wherever I needed to learn how to draw. I took a year off, I learned, and then I applied at fashion school. And I got in. And my mom was very afraid. And by that time, I was already directing shows. She was afraid that what if you waste this time of yours? And I made a promise to my mom. I said, Mama, you let me go. I promise you I will be so successful and so famous that you will never walk out without your head held high. People will respect you because I will do good work. And now that was a promise. You set that goal. I had set that goal for my life very early. Well, मैं बहुत छोटा था when I set that goal. When I would see my mother cry at night if she was ever upset about some bill or this or that, or कोई as a single woman उनके लिए जो problems होती थी, मेरे दिमाग में था कि बस अल्लाह मियाँ मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अपनी माँ को शहजादी बना दूँ, शहजादी, और वो शहजादी की तरह जिए। और ये मेरी जिंदगी का एक मकसद था। और आज तक मैं आपको बताऊँ मेरी माँ शहजादी है। मैं चाहूंगा कि अम्मी और शहजादी बन के रहें। ये मेरी ख्वाहिश है। लोग समझते हैं एक सेल्फिश ख्वाहिश है अपनी माँ के बारे, मैं क्यों ना सोचूं, मेरी माँ है। तो फैशन स्कूल जाते हुए भी was a tough time, पर हमें कहीं और काम करने की इजाजत नहीं थी। स्कूल में ये ऑप्शन नहीं थी, मगर हमारी जो प्रिंसिपल थी उनको मैं बहुत आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, नवीद शहजाद, उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया है, फैशन भी सिखाया है। मैंने अपना पहला थिएटर प्ले म्यूजिकल, मैं थिएटर भी बहुत करता था, एक्टिंग बहुत ज़्यादा करता था। मैंने बेस्ट एक्टर बड़ी दफ़ा जीता हुआ भी है इन थिएटर कॉम्पिटिशंस। तो वो भी मेरी थिएटर टीचर हुआ करती थी, तो उन्होंने मुझे एक्टिंग भी सिखाई और फैशन भी। उनके पास मैं जाके कहता था कि नवीद शहजाद को कि मुझे प्लीज़ आई नीड टू वर्क, आई नीड टू डू अ नौकरी। मैं उनको बता देता था कि I needed someone in the admin to know that I was working. Right. And I was working in like a leather factory, gluing things together. I would be working in some grocery store or whatever it was. तब मैं सारी शाम रात लाट काम करता था और आके स्कूल जाके अपना पेपर करता था। Amazing. हाँ, पेपर दे दिया और नंबर्स इतने आए कि मैंने और माहीन करदा मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, हमने वैलेडिक्टोरियन की स्पीच इकट्ठी दी। Wow. बहुत किलर रिजल्ट आया, कोई जॉब ही ना थे, लिटरली कोई जॉब ना थे। Who did you go to? I don't want to take their names. Come on, Sheroo, अब तो बड़े हो गए यार, come on. क्या फर्क पड़ता है Sheroo? We're not hating on them. We're just saying okay. Many of the designers that are very big even now, most काफी तो चले भी गए, गायब होला भी हो गए हैं। फैशन में 28 साल रहना कोई आसान काम नहीं है, लंबे दौर के घोड़े बड़े कम होते हैं, वो तो गायब भी हो गए। मगर वो सब ने कहा नो वी आर नॉट लुकिंग फॉर। तब तक मैं कोरियोग्राफी करना शुरू हो गया था, शोज डायरेक्ट कर रहा था, बिकॉज़ मैं वहां से सक्सेसफुल हो चुका था। मैं 17 Not within your college. You're saying outside. Outside, I was already doing directing shows. मैं जब फैशन स्कूल में था मैं कोरियोग्राफी कर रहा था, मैं इंटरनेशनल शोज भी मुझे मिल रहे थे, मैं काम कर रहा था, मैं अब सक्सेसफुल हो गया था। पीपल न्यू देयर वाज अ कोरियोग्राफर कॉल्ड HSY। मैं पागलों की तरह काम स्कूल में ही पढ़ रहा था, मगर कोई मुझे हायर करने के लिए नहीं आता। नहीं लड़कों के नहीं चाहिए, नहीं अगर आप आएंगे देखिए आपके पहले प्रेस में आ रहा है तो आप you'll take away attention, नहीं आपके अंदर तो टैलेंट ही नहीं है, आपके अंदर ये नहीं है वो नहीं है।
तो इतने काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास कोई डिग्री भी कर ली, डिग्री भी कर लिया, टॉप भी कर ली, अब क्या होगा भाई? फिर I got an epiphany, which epiphany यानी कि ख्याल आया, एक awakening हुई। वो होती है, वही मोमेंट याद है। मैं epiphany को sorry मैं define कर रहा था, thinking a lot of people won't use that word, I don't know if they do or don't, and if you do I apologize. Yes, epiphany, you must know. Random people are waving, that's nice. Hello. Sweet. Yeah. Nobody's ever waved to me, so I'm very blessed with a Son lot of love. Sheroo. No, I'm blessed with a lot of people. Mashallah. People are truly love me, and that's lovely. Anyway, so क्या हुआ कि मुझे एक epiphany हुई कि आपने अगर जिंदगी में किसी में इन्वेस्ट करना हो ना, आपको इन्वेस्ट उसमें करना चाहिए जिसके अंदर आप उसकी हर चीज जानते हैं, and you believe in the most, and I believe the most in myself. So I said, what am I doing? What is this? I'm job नहीं मिल रही, मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास कितने पैसे बच गए? After graduation, पैसे देने सब कुछ के बाद मेरे बैंक में रह गए थे 2,500 रुपए, जो उन दिनों के इक्विवेलेंट में होते थे $50, बिकॉज तब 50 का डॉलर था। यस, 50 का डॉलर भी था एक वक्त में। तो मैंने सोचा चाहे $50 है मेरे पास, बिजनेस शुरू करते हैं। What? मेरे पास एक रॉकेट की मशीन थी, Okay. उसके अंदर मैंने पेडल डलवाना था इलेक्ट्रिक का, वो 2,000 का आया था अनारकली से। मैं अनारकली गया, डलवाया, पेडल लगाया और ले आया, और रास्ते में मेन मार्केट्स होता हुआ एक मास्टर बैठे हुए थे। मेन मार्केट में तो मास्टर बैठा हुआ करते थे, लिटरली सड़क के ऊपर उनके लगे होते थे। वहां से मास्टर के पास गया, लग रहा था ठीक लग रहा था शक्ल से, लाइक कुछ सी रहा था, ज्यादा कोई लग रहा था, स्केल उसका कोई समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज अपना स्केल वो उसका काम जरा आराम से कर रहा था, मगर बाकी मुझे लग रहा था कि वो ये तो मुझे, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, ये जरा आ जाएगा, काबू आ जाएगा, लाइक कुछ समझ लेगा। और मेरे पास पैसे तो थे नहीं ना, so you were looking at somebody who was हाँ, और उसकी मैंने पूछा कि तुम काम करोगे? शरीफ इंसान आपने पकड़ लिया। उसने कहा हाँ जी मैं करूंगा। उन्होंने कहा मैं डिजाइनर हूँ, मैं तब डिजाइनर को कोई था नहीं, गिने चुने 4 डिजाइनर थे यहाँ, और बाकी 2 दुकानें थी। वो कहा मैं डिजाइनर हूँ और मैं डिजाइन करूंगा, आप मेरे लिए काम करेंगे? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कितना लेंगे आप महीने का? तो उन्होंने कहा 5,000। मैंने कहा विदाउट स्किपिंग अ बीट, प्रॉब्लम। पैसे भी हैं नहीं। 2,000 थे, वो तो खत्म हो गए ना, सब 500 रह गए हैं। ना अभी कपड़ा है, ना धागे हैं, ना कुछ है, ना सिलाई की कुछ चीजें, कुछ नहीं है। लेकिन एम्प्लॉई हायर कर लिया। मैंने प्री प्लानिंग, मैंने इन्वेस्ट किया ना अपने अंदर, मैंने कहा ये रिस्क है, ये रिस्क लो। तो मैंने कहा बिल्कुल दूंगा। उसने कहा ठीक है। मैं आपसे I'll do better than that, and I ripped out a paper and I wrote, मैं आपके लिए कुछ लिखने लगा हूँ, I'm going to write I owe you 5,000, ये तुम्हारी रिसीट है, तुम 1 महीने बाद इसको कैश कर सकते हो। उसने कहा पता नहीं I owe you कोई डॉक्यूमेंटेशन है, लिटिल डिड यू नो I owe you money। मैंने लिख के दे दी और उसको रिक्शे में साथ बिठाया, और रास्ते से हमने बड़ी सी वो मेटल की कैंची ली, कुछ धागे लिए, मैंने धागे भी सिंपल, मैंने व्हाइट ब्लैक इस तरह के ना सिंपल वो लिए, आ गए। अब घर आ गए। हमारे ऊपर छोटा सा अपस्टेयर्स का पोर्शन का छोटा सा फ्लैट है, मामा का और मेरा। मामा स्कूल में पढ़ा रही है तो वो नहीं है, और मेरे पास कहते जी कटिंग का होंगी। मैंने कहा कटिंग टेबल तो है नहीं। तो मैंने मैट्रेस उठाया अपने बिस्तर से, वहाँ फट्टे होते थे, गद्दे वाला मैट्रेस होता था ना। अब हमारे पास वो मोल्टी फोम वाले बड़े थोड़ी थे तब, अभी तो एक वो भी मोल्टी फोम का ही था वैसे, थैंक यू मोल्टी फोम, गद्दे वाला था। हमने ब्रांडिंग तो नहीं कर दी। कोई बात नहीं, we'll beep it out if you want। I don't mind, it's my friends। देखो जरा, देखो जरा कहाँ क्या उसको पता कि मैं कनेक्शन 4,000 रुपए के मुश्किल से गद्दा लेके आता था। एनीवे वो गद्दा उठाया और वहाँ रखा। मास्टर साहब ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा सवाल है। उसने कहा कपड़े का है? Where is the fabric? बनाना क्या है? सीना क्या है? सीना क्या सर? मैं कहा ये तो अच्छा सवाल है। मैं कहा मेरे पे जेब में तो शायद 60 रुपए हैं, तो अब तो नो फैब्रिक। So he said अच्छा फिर कल भी आ जाऊँ? मैंने कहा you know I am a businessman at the end of the day, अंदर मैं ये तनख्वाह दे रहा हूँ, ये तो दिन का ये ज़ाया हो रहा है, अभी कुछ तो सिलवाऊँ। So I went to my mom's room and अब अम्मी तो थी नहीं, और उनका एक बेड कवर बड़ा प्यारा सा था, वो मैंने बेड कवर लेके मैंने कहा इसको काटते हैं। Whoa! Oh my gosh! हम इतने एक्साइटेड हो गए, tapestry जैसा, इतना काटने में एक्साइटेड हो गए,
और मुझे पैटर्न बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, मुझे पैटर्न भी आता है, सीना भी आता है, काटना भी आता है। मैं एक सिर्फ नाम का डिज़ाइनर नहीं हूँ। हम एक्चुअली एजुकेटेड वाले डिज़ाइनर्स हैं। मैंने वो एक जैकेट काटी और उसको भी बड़ा मज़ा आया। उसने देखा कि अच्छा इस तरह काट रहे हैं, ये पैटर्न जल्दी जल्दी बन रहा है। मैंने कहा एक मिनट, पूरी कलेक्शन बनाते हैं, 5 जोड़े बनाते हैं, ये इसकी जैकेट होगी, इसकी स्कर्ट होगी। बाबा Oh my gosh. अम्मी के पर्दे, उनके दुपट्टे, डाइनिंग टेबल की कुछ जो चीज था अम्मी के आने से पहले हर चीज कट कुट के दीवारों पे कोई पर्दा नहीं. No kidding. Everything, yes, Not gonna. everything was cut. So you And found यानी जितने भी लेंथ थी फैब्रिक की जहाँ दिख रही थी घर में जो जुड़ रहा था हमने एक बना लिया. एक कलेक्शन बना ली. हाँ, पूरी 5 जोड़ों की कलेक्शन हमने अगले I think I still remember the day. The day I picked up the master and the day I decided that मैं HSY मुझे लोग कहला रहे थे जब मैं 17 था. तो मैं तब से डायरेक्शन कर रहा था. शोज की डायरेक्शन मैंने पहले शो की डायरेक्शन 17 इयर्स की एज में की थी. जब को सोच भी नहीं सकता था कि डायरेक्ट कर रहा होगा. तो मैं अपने आप को HSY कहता था. अब मेरा ब्रांड HSY जो था ना, वो उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन मैं वो मशीन घर लेके आया था. और वो डेट थी 5th December 2000. एंड मैंने कहा ये इसी HSY को वो मैं कागज से भी लिख रहा था, अपने को चीजें बना रहा था कि अगर कोई क्रेस्ट होगा तो ये होगा तो वो होगा क्या होगा. और ये कपड़े हम दोनों वो सी रहा था, मैं तरपाइयाँ कर रहा था. 5 जोड़े बन गए. अब 5 जोड़े बन गए हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि अब इसको ये मॉडल कौन करेगा, क्या करेंगे इसका, किस तरह मार्केटिंग कैसे करेंगे, किस तरह होगा. हाँ यानी इंस्टाग्राम तो था नहीं, फोटोग्राफर्स के पैसे भी नहीं थे, मॉडल्स के भी नहीं. ऐड किस तरह बनाने, किस और तरह नहीं, बताने. फोटोग्राफर्स के छोड़े, मॉडल्स ही नहीं थे तब हार्डली. Right. और कुछ गिने चुने थे. मेरे सारे दोस्त थे, मैं कोरियोग्राफी सब क्या करता था, मगर मैं किसी को पहली दफा एक फेवर करके तो नहीं पूछ सकता था ना. आई मीन आई गेस पूछ Ideally भी not, सकता था, हाँ. मगर मेरे पास. झिझक और थी, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैं साथ साथ अपने ड्राइववे में और बाहर सड़क पे एक मॉडलिंग स्कूल भी चलाता था. क्या? हाँ, जहाँ लोग आते थे मैं उनको चलना सिखाता था. और मैं बहुत सीरियसली था कि मैं कहता मैं अपने मॉडल्स क्रिएट करूंगा तो हमारे शोज और होंगे तो हमारे पास मॉडल्स होंगे. उसमें सब आते थे. तो उनमें से एक लड़की जो आती थी, जो बहुत ही मेहनत के साथ काम करती थी और बहुत खूबसूरत थी और बहुत उसको शौक था कि वो कामयाब हो. वो एक लड़की थी जिसको प्यार से हम मोना कहते थे. Okay. उसको मैंने कहा कि यार तू मेरा शूट करोगी. मेरे 2 दोस्त हैं, मेरी बहन के 2 दोस्त थे, अभी भी हैं, और हमारे बाप तो मेरा फैमिली की तरह है. एक का नाम था अतर और एक का नाम था शहजाद. और मैंने उन दोनों को फोन किया. मैंने कहा ये देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लवली, उसका नाम मोना है, असल में उसका नाम ईमान अली है, उसके साथ शूट करते हैं. एंड ईमान ने मेरा पहला शूट किया फॉर माय ब्रांड HSY. हमने मेरे एक दोस्त आमना नासिर के घर में शूट किया. उसके मजे की द्वारें शुआरें थी और ग्रीन रंग की बैकड्रॉप थी और मेरे ऑरेंज पता नहीं क्या क्या कलर कपड़े थे. और ये कपड़े बन गए. इन कपड़ों को मैंने भेजा. तस्वीरें आ गई, नेगेटिव्स आ गए, हर चीज आ गई, नेगेटिव्स आते थे ना. अब मैगजीन्स को तो मेरे पास पैसे नहीं है. मगर अब इतनी देर तक मैं कोरियोग्राफी तो कर रहा हूँ, तो सब HSY को तो जानते हैं. तो मैंने रिस्क लिया. और मैं रिस्क वर्ड ले रहा हूँ. मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग चांसेस. So I took a risk and I wrote a letter to each of the editor. शायद मैं उनसे मिला भी नहीं था. And I wrote, hi, this is, Hassan Shahryar Yasin. You must have seen my shows. If you haven't, let me explain who I am. And I believe that I am about to start a brand that will be very important for Pakistan and also important for the industry. And I really want to work hard at making an industry and helping to put an industry together. Because ये मेरे सारे सच्चे ख्याल थे. And I hope that you can give me some kind of space for my shoot that I'm sending you. ये December था. अच्छा, January. You wrote a letter and this is like conventional letter? नहीं, conventional लिखा, मेल किया. Oh wow. मेल किया, लेटर मेल किया. Right. साथ वो little composites of the yes, वो the shoot के like a contact sheet. बिल्कुल, अगर वो करना चाहें तो. जनवरी में हमारे पास गिने चुने 8-9 मैगजीन थे. शी मैग. January of 2001, I was on the cover of 5 of them with that same shoot. It was on the cover of 5 magazines. Oh wow. And Allah का शुक्र है उस बात के आज तक our phones have never stopped ringing.
and I have done everything in my Amazing. power Amazing. to continue to do to keep people interested in the brand, in the person, reinvention. मैं reinvent करने में बड़ा believe करता हूँ. अगर आप और मैं लोग कहते हैं मेरे कपड़े जो हैं वो ब्राइडल्स हैं. हाँ, मैं ब्राइडल्स ज़्यादा शौक से बनाता हूँ. मैं ब्राइडल्स बनाता भी हूँ लाल रंग के जो मुझे पसंद है. मुझे खानदानी ट्रेडिशनल ब्राइडल्स पसंद है. शादी फॉर मी इज अबाउट अ शहजादी एंड वो शहजादी अच्छी लगती है हमारे कपड़ों में. वो फ्रिलियों शिलियों में मुझे नहीं पसंद. मुझे ना फ्रिलियाँ पसंद हैं. मुझे लगता है कि वो हमारा कल्चर ही नहीं है. अगर हमने फैशन करना है तो किसी और दिन करें. शादी के दिन फैशन करने की जरूरत नहीं है. वहाँ आपको लगना है खानदानी खूबसूरत शहजादी. And because I don't think that our shadis are about the boy and the girl, it's about two families coming together, Right. two families joining forces to become one. I think it's very important to keep everyone's respect and decision in mind. So I like to make traditional beautiful bridals. अब उसके अंदर मैं कितनी चीजें चेंज करूंगा. दुपट्टा 3 गज से 4 गज कर दूंगा. बूटी यहाँ से वहाँ कर दूंगा. अब उसके ऊपर मैं बतखें और ये चीजें तो मैं डाल नहीं सकता. ना मैं उनके ऊपर स्क्रिप्चर्स एंड छोटे मिनिएचर्स डाल सकता हूँ, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल चीजें नहीं है. हम उसको और बस अपनी एक ईस्टर्न एम्ब्रॉयडरी में करेंगे ना, तो हम शूट्स के तरह तरह करते रहेंगे, मगर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं. Right. उनको आएंगे जरूर आपके पास. Right. अगर आपके पास अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो लोग आते हैं वो ट्रेडिशंस को समझते हैं, हेरिटेज को समझते हैं तो आते हैं. मगर लोगों की नजरों में इंटरेस्टिंग रहने के लिए कभी आपको ब्रांड को बदलना पड़ता है और कभी आपके ब्रांड के इंसान को बदलना पड़ता है. एंड वहां मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई कि मैं कोई नई चीज ट्राई करूं. मैं समझता हूं क्या होगा. मूवी इज्जत का मसला है. इज्जत का क्या होगा. मैं I'll make a fool out of myself. कोई बात नहीं. Oh, that's So what? amazing. That is So amazing. what if I make a fool out of myself? And that is so important for people to hear, because you don't imagine if you're saying that, whereas हमें तो ये दिखता है ना कि you, because you're HSY, you got cast, in a movie, for the value that you already bring to the table, and of course your performance and the way you are, but उनको ये नहीं पता कि inside you might be saying, okay, so what if I fail? यार मैं तुम्हें अभी बताऊं, मैं पहली सी मोहब्बत शूट करने गया था. पहले दिन मैं इतना डरा हुआ था. शरियार माया मेरे दोस्त हैं, राबी मेरी दोस्त है, Right. मगर फिर भी मैं इतना डरा हुआ था. मैं सोच रहा था इस वक्त इस स्पॉट बॉय को मुझसे ज्यादा पता है, मुझे कुछ नहीं पता. शेरू तुम्हें कुछ नहीं पता. और मैं डरता ये चीजें करता हूँ, मगर मैं सिर्फ डर में सहम नहीं जाता. मैं डर में एक्साइटेड हो जाता हूँ कि सीखो. मैं आपको बता दूं 28 इयर्स हो गए मुझे इस बिजनेस में. मैं समझता हूं कि अभी मैंने और बहुत कुछ सीखना है. मुझे तो अभी हल्का सा है. और क्या मैं दूसरे लोगों के आगे, हाँ बड़े गट्स चाहिए होते हैं यार. जब आप एक ब्रांड हो और आपको उस तरह पहचाने और आप एकदम से एक मौलवी का रोल करें और उसके बाद एकदम से एक विलन का रोल करें और अब मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ एवेज के साथ. इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं लोगों के आगे जाके कहना कि अब मुझे फिर से आप जज करेंगे. मगर मैं उससे नहीं डरता. मैं समझता हूँ जिंदगी क्या है. Here's the end to this all because we're getting home. When my mom got sick, she was looking at अम्मी के कमरे में एक अलमारी है, उसके अंदर मेरे सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं. And मैं उन अवार्ड्स को उतना नहीं देखता ना. मैं समझता हूँ मेरी माँ की जो है. अम्मी looked at these awards and अम्मी कहती है तुम्हें पता है तुम्हें 36 अवार्ड्स मिल चुके हैं. मैंने कहा हाँ मामा. But she's very proud about my awards. She said 36 awards किसी को याद नहीं रहेंगे. I said, you're right. Most people won't even know. They Right. won't care. Right. She said, but you will, because this was your journey. And she said, I'll tell you this, because she was lying in bed and of course she was feeling a little, like, what has life brought me? Right. She said, life is not going to be about other people's approval. It is, life ये होगा कि अगर तुम्हें याद रखेंगे ना, वो तुम्हें याद रखेंगे तुम्हारी इखलाक की वजह से. और तुम्हारे अगर कब्र पे भी आएंगे तो तुम्हारी इखलाक की वजह से आएंगे कि तुमने उनको कैसे महसूस कराया उनके बारे में जब तुम उनसे पहले मिले. Right. लोगों से अच्छे रहो और जो तुम हो. और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसा You are. इखलाक है. You are. मगर तुम्हारी जिंदगी का जो कुल है ना, वो होगा जो तुमने एक्सपीरियंस किया. Yeah. और तुमने क्या एक्सपीरियंस किया. तुमने ये सब कुछ कर लिया. क्या सिर्फ यही इंडस्ट्री थी, यही सब कुछ था? जिंदगी में और इतनी चीजें, पहाड़ों से छलांग मारना, एक्टिंग करना, गाना गाना,
लेक्चर देना, स्कूल चलाना, ये तुम क्यों नहीं सोचते कि ये तुम कर सकते हो? क्योंकि तुम इस पे फेलियर हो गए। क्या होगा अगर तुम फेलियर हो गए? जो तुमने दुनिया को प्रूव करना था वो तुमने प्रूव कर लिया। अब तुमने जीना एक्सपीरियंसेस के लिए और ऐसी चीजों के लिए जहां तुम दूसरे लोगों को वापस भी वो ताकत दे सको। I've held those words very dear, and to this day, though I'm very lucky that I get to do all the things that I do, I'm still incredibly humbled that I still get to do them. And I'm excited to do more. And if people judge me, I don't mind. It's okay. Yeah. But I hope that people look at it not to judge, but also as an example that you, anyone at home, have the power to be limitless. Oh, बहुत ज़रूरी है. We are limitless. Absolutely. And I hope that people remember that. Yeah, jeez. Yeah, jeez, is. शेरू, एक चीज़ और भी. इनफैक्ट बहुत सारी बातें अभी तो I don't need to do much with a guest like you. बोलेगा. No, I love it. I love it. You are weaving one memory into another. I'm actually parking here so that we get some sun as it's setting. Okay. Or we do a standing shot too? Yeah, why not? Because अब वो धूप ज़रा वो ढलती जा रही. अभी हम अपनी मर्जी से. I honestly have no clue who this person is, but people will wave wherever they see me. None of this is missed on me. शेरू मैं आपको बताऊं. अभी तक मैंने I've only put out 7 episodes, but I have shot 7 more that are in edit. So basically I have been driving around for many hours. Yes. बहुत सारे लोगों के साथ. Nobody's waved. I don't have any money, I apologize. No, it's okay. Nobody has waved. शुक्रिया बीबी. तो आपने amazing. शेरू पहचान बनाई यार. You're a freaking brand. You're like even your body is a brand. Your face is a brand. Like तो शेरू और क्या पहचान रहे लोग? यही कर रहे हैं. They're recognizing you and nobody. शेरू मैं सच बता रही हूँ. Very interesting that people say about you. Okay. Sheroo can sell anything. Have you heard that about yourself? How do you feel when people say that? I don't mind at all. And जो वो बात थी ना, like your communication skills, and I mean those are important clearly, because if a designer, we can see in our industry, if they're only skilled and don't have the gift of communication, we can see where they are, and we can I mean you must have it to become sustainable as a brand and to grow as a brand, as a person. I feel when people say things like that, ये तारीफ कम और एक टॉन्ट ज़्यादा है कि ये तो कुछ भी बेच सकता है. मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, and I'm laughing all the way to the bank. मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है. एक मेरा बेस्ट फ्रेंड कामी हमेशा कहता है, I don't know who he quotes, but he always says, don't complain, don't explain. But since you're interviewing me, I have no explanation to give, except लोगों को बातों में डालना आसान है, जो कम्युनिकेट कर सकता है. उनको अपने दरवाजे में खींचना आसान है. उनको रखना और उनको कोई चीज देना और उनको बार बार वापस आके वही चीज वो आपसे मांगे, ये आपको कंटेंट चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए. बिल्कुल. So I've never been shy of that. I'm a very overconfident person, perhaps. ये बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता. हाँ, perhaps. और मेरे इंडस्ट्री में, स्पेशली जब मैं नया आया था, ये बड़े इरिटेट करता था लोगों को. कुछ लोग
मेरे कॉन्फिडेंस है या मेरे बहुत स्ट्रेट टॉक से, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेट टॉकर भी हूँ. मुझे चल या तो जी हाँ मक्खन लगाया है तो जी हाँ मक्खन लगाया है, चल ये नहीं करता. जहाँ तारीफ होती है वो मैं खुले दिल से तारीफ करता हूँ. अमेजिंग 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 अमेजिंग. जहाँ मुझे लगता है समथिंग इज रॉन्ग, मैं खुले दिल से कहता हूँ यार दिस इज कुड बी रॉन्ग, और व्हाई डोंट यू डू दिस वे. बिकॉज मेरे अंदर एक सर्टन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो समझ से एक एरोगेंस की जगह से आ रहा है. एरोगेंस से कहीं नहीं आ रहा, मैं एरोगेंट नहीं हूँ. मगर मैं तुम्हारे जजमेंट से, तुम्हारे चार दोस्त क्या कहेंगे उसकी जजमेंट से मैं नहीं घबरा रहा. बिकॉज ना तुम मेरे बिल्स कभी दोगे, ना तुम मेरे टेबल के ऊपर मैकडॉनल्ड्स रखते हो, ना तुमने कभी रखा है. जो मैं करता हूँ मैं खुद करता हूँ, तो मैं तुम्हारे जजमेंट से इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं. मुझे इसका प्रूफ जो है ना, वो अभी जो लोग मुझे वेव करते हैं, प्यार करते हैं, वो मेरा एक प्रूफ है. क्योंकि मैंने आपको कहा था, अम्मी ने मुझे ये कहा था एक इखलाक का. मेरी जिंदगी में मैं अब आपको तो मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, HSY मेंटरशिप प्रोग्राम. वहां मैं थैंक यू. That's about your mom. Sweet. Mentorship program. Mentorship program. I try to teach my staff, to my team. They're not my team, they're my family. मुझे तो ये बच्चे जो भी मेरे साथ काम करते हैं, जितनी देर के लिए भी करते हैं, वो मेरे फैमिली की तरह है. मैं उनको डांटता भी उसी तरह हूँ जैसे मैं अपनी फैमिली को डांटूंगा, और प्यार भी उसी तरह करता हूँ. आते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ चले जाते हैं, you know, things like that happen. But I tell them 3 things, of which I believe that is my success. एक, मैं जो भी इंसान हो, जैसे मर्जी मेरे बारे में बात कर रहा हो, मुझे मेरे बैक के पीछे टॉन्ट दे रहा हो, मेरी सक्सेस को क्वेश्चन कर रहा हो. बड़े मेरे डिजाइनर फ्रेंड्स हैं जो आके शेरू 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 और पीछे बातें कर रहे होते हैं. उनको समझता मुझे पता नहीं, मुझे हर चीज पता होता है. एक एक बंदे की एक जो डुप्लिसिटी होती है ना, उसको मैं जानता हूँ. मगर मैं हर को एड्रेस नहीं करता, बिकॉज मेरे पास ना इतना वक्त है और ना मेरा इतना इंटरेस्ट है. मेरे मुंह पे अच्छे हो ठीक है, मगर मैं उनका इखलाक अच्छा रखूंगा, अपना इखलाक अच्छा रखूंगा, और तुम्हारे बारे में बकवास नहीं करूंगा. मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. दूसरी चीज, मेरी नीयत साफ है, और मैं अपनी नीयत पे काम करता हूँ कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ ये किस नीयत से कर रहा हूँ. और ये अम्मी की हमेशा राय, अपनी नीयत साफ रखो, दुनिया में तुम्हारे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकेगा. एंड तीसरी चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ. देयर इज अ मच बिगर पावर that is keeping an eye on me. So I'm accountable. And I hold myself accountable to him. So जब मुझे उससे डर रहे हैं, तो मैं तुम्हें क्या प्रूव करना है? तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए आया नहीं हूँ. मैंने सवाल, उनके जवाब मैंने देने, और मैं, क्योंकि I feel his power and his presence and his force with me always. I'm not afraid. Right. And therefore I'm never worried. So yes, I've heard this. I've heard people say he can sell anything. अच्छा, मैं उसे पॉजिटिव स्पिन में लेती हूँ, because I know, and you are right, it is said perhaps with that Yes, more. because everyone's always questioning, ये लाल ब्राइडल बनाई जा रहा है, इसने ना कोई फुनफुने बनाए हैं, ना कोई मोरक्को के अंदर शूट कर लिया. How is this working out? Right. No, but मुझे ज़्यादा तो ये है कि yes, you know, he can, and yes, that is what you need to be successful. I mean, you can't take this big element of communication and being appealing to your audience, या आप निकाल देंगे तो फिर आपका ब्रांड बचता क्या है? कुछ भी नहीं. Nobody buys just फैशन जो है ना, लग्जरी फैशन, ये ना नीड है, बिल्कुल ना ये वांट है, ये डिजायर है. Yeah. You sell desire. Right. I mean, you have to have the right communication skills to be able to tell a story, Right. to sell that. Right. Don't be in this business if you don't. Right. Then go into ready to wear. है ना? Sell your lawn. Right. What do you think about? By the way, I know हम लोग like in the mid 90s when we started falling in love with fashion and we started looking at the local fashion scene, and in the next 4 to 5 years when we joined the industry, तब भी बहुत मजेदार चीजें होनी थी. That's when you were doing the shows and all of that, right? And we were just flipping at magazines and looking at you from a distance. So now, I don't know, मैं तो खैर बहुत far removed हूँ from it, but is it the same fun that we used to have and that we saw, you know, backstage and all of that? I'm still having a lot of fun. Yeah? I'm personally still having a lot of fun. Are you still choreographing as much and all of that? No, I'm not choreographing at all. Right. I'm not choreographing at all. I've stopped choreographing shows, other people's shows especially. ठीक है. I feel like
now there are lots of people to do it. And ye ek path ban gaya hai, now someone else should do it. You should also leave some paths so other people can do it as well. So I don't do that. But still, my shoots, my campaigns, my office, my life, my work with my designers, I still have a lot of fun. मैं ये काम ना कर सकूं if I wasn't having fun. I still really enjoy myself. And in the experience, I used to love working with you guys. You know, we used to do these shoots that would go on for days, if you recall. Yes. I still get to do them now with other new people. Right. And I feel, शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ ये, I feel I have always brought in that energy to a thing that has always been mine. Yes. So that energy is still with me. Absolutely. So whoever has worked with me, and I think hopefully they will agree, they will always remember that energy. And that energy comes from a place of ikhlaq, niyat, and Allah se dar. And love. And tons of love, dude. I'm lucky to be loved, and I love back. I'm not afraid to love. I mean, मुझे याद है, as a new entrant in the fashion scene, you've always only supported us. And you even, I mean, आपकी दोस्तियाँ हैं पुरानी, and you risked, you know, that, and said, okay, no, it's not like I'm not working with them. I'm also working with you. You know, I'd also like to, and so आपने, you kind of brought us into the fold that way. मैंने जितनी collaborations की हुई हैं, जितनी दूसरों के साथ काम किया हुआ है, I think has always proved that I believe that working with everyone is important. Yeah. And yes, when I came to you guys, yes, I did work with other people at that time, and I continue to still work with them. And now I continue to work with new people too. देखिए जिंदगी क्या एक series of experiences है ना, छोटा सा यहाँ experience मिल गया, आज मेरा ये experience अंदर जाऊँगा, एक और experience होगा, किससे फोन करूँगा, अगर उस experience के अंदर मैं और लोग डाल सकता हूँ तो उसके अंदर मेरी भी जीत है और उनकी भी, उनकी जिंदगी में एक नया experience आ जाएगा और मेरी जिंदगी में एक नया experience आ जाएगा, शायद मैं उनसे कुछ सीखूँ, शायद मैं उनको कुछ सिखाऊँ, but nonetheless it's a new experience, it's a new bag of tricks, and I love that. Amazing. And also new designers who step in and come into the industry, I love going and supporting them, not because I want them to know, oh, I'm not a threat, or don't think this or think that. I put myself in their place. Right. मुझे भी याद है जब मैं आया था, मुझे भी याद है कि कितना मुश्किल लगता था, कितने बड़े-बड़े ख्वाब थे, क्या-क्या बनना चाहते थे, किस बात के बारे में सिक्योरिटी थी, किसके बारे में इनसिक्योरिटी थी, मुझे उस चीज से एम्पैथी है. Right. तो मैं उसको embrace जरूर करना चाहता हूँ कि I get what you're going through. Forget I'm HSY right now. I'm just loving the fact that you have taken a risk, because ये सारा जो है ना, ये तुम भी जो काम करते हो, हम सारा काम करते हैं, एक वो risk है that, जैसे वापस हम come back to the same thing. We're all sensitive souls with thin skins. And when we step out onto the world, on a platform, on a catwalk, on a movie or a big parda, or on a campaign, on YouTube, you are taking a risk. Absolutely. Of being judged, of being questioned, of being also applauded. Yeah. It takes a certain amount of confidence and guts. Yeah. Not everyone has it. So when someone steps into the industry, I go and hug them immediately, like, I'm with you. And because मुझे याद है कि मेरे लिए ये नहीं हुआ था when I stepped in, you can only correct the mistakes of your past generations by not making them again. Yourself. You cannot make them yourself. And if you are going to repeat the same patterns, then you have been no good to this world. Absolutely. You have to break the patterns. Right. So I will gladly go and give them the support. And since I'm never threatened by anyone's work, because I come back to the same thing, risk is not in your or my hand. Absolutely. It was already written. So I'm not threatened. What is coming to me will come to me. What is not coming to me will never come to me. Right. But I will go and support you. I will applaud you. I will go to your shows. I will stand up and give you applause. एक दफा मैंने किसी fellow designer के आज जाके तालियां बजाई थी, कहा था what an amazing show. And उसी ने मेरे बारे में कहा किसी को फौरन नहीं कि देखो कितना loser है, मेरी तारीफें करी जा रहा है और मैंने तो उसके एक जोड़ों की एक भी तारीफ नहीं की. और मैंने सुना, मैंने अंदर सोचा, should I stop? And I'm like, no, I'm not going to stop. Yeah. I'm still going to applaud you because it didn't think. If you didn't think my clothes were great, or you don't like what I do, totally okay with me. Right. मेरी self-esteem और मेरी self-respect में कोई कमी नहीं हुई. If anything, I think मैं एक तुमसे बेहतर इंसान हूँ. Because मेरे अंदर एक दिल है कि मैं कर सकूँ. This has been my motto in life.
Right. Be good to others, have fun, enjoy this life, be respectful, be accountable. And that's it. It's going to be over before you know it. I know. But abhi the film aa rahi hai. Is it? Are you shooting right now? We've shot half of it, more than half of it. सिर्फ In Lahore? नहीं कराची में सिर्फ आई थिंक 10-11 सीन रह गए. ये मैं जरूर कहूँगा महविश के साथ काम करने का इतना मुझे मजा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता. मैंने बहुत ज़्यादा एक्टर्स के साथ काम नहीं किया हुआ मगर मेरे एक्सपीरियंसेस जितना कम रहा है बहुत अच्छा रहा है. फिल्म विद सनम एंड मोहिब, another TV drama with Sharyar and Maya. Right. And now a telefilm with Mahvish. I don't think anyone gets this kind of, No. You know, this kind of platform. this kind of platform with the this best group of the people. best. Yeah. But Mahvish के साथ काम करने का एक मजा ही कुछ और है. Yeah. She is an incredible actor, one of the most generous actors I've met. And हमारी chemistry एक इतनी strong है. It's so Amazing. unbelievable. Not because of me, I think because of her. She really is so smart and generous in the way that she is, your co-star, that I look forward to it. And Oh, जब wow. हमारी shooting खत्म हुई थी मैं बड़ा sad था कि I'm not going to get to see her for a little while. But Oh. अभी उसकी film निकल रही है और उसके बाद I'm going to start shooting again and I'm really excited. I'm Sweet. having the best time. Abhi withdrawals ho rahe hain aapko. Okay, you want to be on the film set. Amazing. I like it. feel a lot of withdrawal when I'm not Yeah? on a set. Yeah, I really like Now, being on a set. which one do you prefer? Fashion or film? No, film or TV? Oh, Ab to aap, you've gone somewhere else, so let's talk about that. So, I mean, because सोचो यार क्योंकि सोचो कभी सोचे थे. Can you imagine? I've We have never- been thinking. never. I have to pinch myself. I really do. मैं इसको lightly नहीं लेता. I pinch myself like, what? So- You've already been in a movie and you've been on television drama with those kind of guys. so Um, because you're not from that, you're not Yes. just an actor, Yes. and because you're my insider. So tell me which one and why. And because I know both are hard. I know both. Television is very hard. Achha, it's harder than film. Far harder. Because you have to do a lot of scenes. Yeah, that And you have I've to get heard. a lot done. I've heard like पता नहीं 20-25 scene कर रहे Yeah, होते हैं कभी दिन कभी में. 11-14 scenes कर रहे होते हैं आप दिन में. God. And to keep that energy level is very hard. And Film is also very hard because that one scene requires so much perfection. But So I've much work realized goes what in. I like in both. I like being in front of the camera. I like well, that's I like- no secret. I like finding हर character की एक आवाज है. मैं एक बहुत method actor हूँ जो मुझे नहीं पता था. Oh. मैं वो method actor Nice. मैं कभी सोचा नहीं था method actor क्या होता है. मगर मैंने realize किया कि मैं हूँ. मैं You do the हर- research and you're like I do the accent research. पक्का करें. मैं अपना accent पक्का करता हूँ. मैं अपने कोच के साथ बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ. मैं अपना बॉडी का वेट चेंज करता हूँ. मैंने without अपने- anyone asking. No, I do it myself because Like I the know. directors or nobody says or they say, yeah, we would like I you. suggested myself. मैं कहता हूँ मैं इसके Oh, लिए ऐसा wow. करता हूँ. मैं You इसके लिए train ऐसा for करता it. हूँ. Oh my या gosh. मैं करूँगा. आप मुझे 3 महीने दें. मैं आपको ये बॉडी जैसा चेंज करके लेके आऊँगा और ये करूँगा और वो करूँगा. मैं एक्साइटेड होता हूँ. What? मगर तुमने मेरे Amazing. साथ शोज किए हुए हैं, शूट किए हुए हैं. मैंने कभी कोई ऐसा काम किया हो जहाँ मैं 100% ना आया हूँ. नहीं. उसके तो फायदा नहीं है. हाँ, नहीं, ऐसे तो कभी 100% आने का मजा है. ये कैरेक्टर जरा मुश्किल था बिकॉज इसके कैरेक्टर के अंदर बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है. ये बड़ा फर्क सा इसके आदमी के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं. सैडनेस भी है, खुशी भी है, गम भी है, artist है. लॉस्ट भी है. little bit of an artist, yeah. Okay. And देखिए ना मैंने सारी अच्छी चीजें कहा कि आर्टिस्ट हो. हाँ, ये अरे उसके से बैंकर है. नहीं बैंकर नहीं है. डेफिनेटली बैंकर नहीं है. क्रिएटिव है. और इसकी जो co-star है उसकी भी इमोशंस बहुत they're all like his. So those two volatile, over-explosive emotions coming together in a beautifully written script. Faiza Iftikhar has written it. It's beautiful. Nice. I'm really excited for it. And it gives me a break to do something different. I'm right now, and then, I'm just about to launch a new collection tomorrow. So all of that is Amazing. happening as well. Right. But how lucky am I? Fantastic. How lucky am I? You are. And यार Knock लोग on तो wood. मैं somewhere. बता नहीं सकता. Knock on wood. अल्लाह का लाख शुक्र है. और प्लस मैं इसका भी लकी हूँ कि मैं बड़े लोग ने काम करते हैं. मुझे हर काम में कामयाबी मिली है. इसमें भी मैं I can't tell you how grateful I am. Mashallah. Grateful. Mashallah. पर अल्लाह करे यार इस तरह चलता रहे.
And अल्लाह करे कि हम आपको शूट करें. मिनी फिल्म करते हैं. हाँ, मिनी फिल्म. मैं फिल्म करें. मैं फैशन शूट नहीं करना चाहता. एक्चुअली मुझे फैशन शूट्स खुद मुझे लगता है कि अब हर चीज मूविंग विजुअल होनी चाहिए. हमें कोई But we नहीं मैं तो कह रही हूँ फिल्म करें. फिल्म. हाँ. Let's do a film. Script हो. सारा कुछ हो. Let's do let's that. work on it. That I'm all I love that. I want to do that. Do you have an idea? I have a script, but that is not. Like we'll talk about that. We should do a short. A short. Yeah. I've written a short, but that's no. I'd like to do something different and fun with you. ठीक है. I'd love to. Please. I'd love to. Before we end this, Was this us? yeah. How am I looking? Okay. So, It's cool. in the digital age of insecurities that are brought up because of likes and hits and follows and the lack of not having those, and or somebody becoming a viral sensation versus a person like you who's gone through the grind and achieved something. So what would you recommend or advise to young kids who are looking at social media and feeling, jealous and insecure or not good enough and wanting this quick fame? Usko kya karna hai? Quick fame is not sustainable. You can be a moment. Right, one hit wonder. Yeah, you can be a moment and that moment will go. But that's because you're looking for gratification from other people. If you're not looking for gratification from other people and you're doing it because the purpose is to enjoy it and then continue longer, you will be less angry. And don't do it for the sake of being famous. Don't do it for the sake of being popular. Do it because it makes you happy. And if it doesn't make you happy, even all the popularity and the fame won't make you happy. Right. I cannot stress that enough. I tell that to all the peer kids who come to our mentorship program too. Chuma art the next level brand banne ki koshish na karo. Give yourself time, learn, experience, enjoy the ride. There is beauty in a beautiful trajectory. But when it is very violently up, it is usually very violently down. Yeah. And I have seen it. I have seen so many people come up to nothing and suddenly boom, they're huge. And then 2 years later, 3 years later, they're gone. Right. I call it the 5-year cycle. Popularity, one-hit wonders, key phrase कह दिया जो सारे कर रहे हैं. Right. इसके 5 years हैं. इन 5 सालों में अगर आपने अपना कोई कंटेंट निकाल लिया और आपको अपने काम से खुशी हो गई तो आप आगे शायद चल सकें. मगर यूजुअली आपकी पहचान वो एक चीज बन जाती है. Then you get stuck in that. आपकी पहचान सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए. आपकी पहचान होनी चाहिए of all the limitless things that you are. Explore all of them. Right. Amazing advice. I'm going to percolate all of this. Percolate. I like that word. I like that word, percolate. Yeah. It's good to see you. Good to see you. And I'll see you soon. Thank you so much. No.